Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. This is our part 3 of chapter number 2 is sexual reproduction in flowering plants. Okay, so in previous lecture we have studied about the structure of microsporangium, the process which we can say the microsporogenesis, and we have seen about the pollen grain. Okay, so the final product of microsporogenesis is pollen grain. Pollen grain is a male reproductive organ. We can say the male reproductive gamete is a part of reproductive organ. Okay, so this is our previous lecture. Now in today's lecture we will discuss about the pistil, megasporangium, it means ovule, and we will see about embryo sac. Now the gynoecium represents the female reproductive part of the flower. Now we have to talk about female reproductive part. We have seen the male reproductive part, but now we will see the female reproductive part. As we know, this is sexual reproduction, that means two gametes are required, male gamete and female gametes. So here gynoecium is the female reproductive part of the flower. Here you can see the flower, the parts of flower. Okay, you can see here the stigma, style, and this ovary. Okay, so this is the part of female reproductive organ. This is one stigma, style, and this is third ovary. Okay, and another parts like stamen. Okay, we have already seen about stamen, and here you can say this. Okay, this is the part of male reproductive organ. Okay, stamen, and these petals and sepals are the additional organs of the flower. Okay, helper, we can say they help. So now the gynoecium may consist of a single pistil called as monocarpellary. Okay, so we can say carpel, pistil. Okay, so this stigma, style, and ovary, so this structure is called as pistil, and this structure is also called as carpel. Okay, here I am highlighting this structure. You can see here I am highlighting this. Okay, so this structure particularly, this is the female reproductive organ because ovary is there. Okay, now monocarpellary meaning the single pistil in the flower, and or may have more than one pistil is called as multi, mono and multi. Okay, multi meaning more than one, so multicarpellary. I will show you the diagram. When there are more than one, the pistils may be fused together. Okay, जैसे अभी एक पिस्टिल से ज़्यादा है तो उसमें फर्दर टू डिविजन्स आते हैं. ओके, अगर वो फ्यूज टुगेदर है सो उनको बोलेंगे सिंग कार्पस. सिंग कार्पस वी विल सी इन फिगर 2.7b, और मे बी फ्री or free called as apocarpus. I will show you this picture particularly. Okay, here, so guys, this is stigma, this is style, this is ovary. Okay, so this is the part of female reproductive organ system, and now this is B figure here is multicarpellary. These two are multicarpellary because more than one stigma is here, so that's why. But here this is a type of syncarpus. Okay, this is a type of syncarpus because syncarpus meaning all the pistil are fused together, and now this C figure is a you can say apocarpus because the carpels are free. Okay, here one, here second, here third, so they are free, and in this they are fused. So there are two types in multicarpellary. Okay, जिसमें एक है उसकी तो कोई बात ही नहीं है, जिसमें एक से ज़्यादा है उनकी बात है कि वो फ्यूज टुगेदर है या फ्री है. ओके, सो दिस इज द fact. Now each pistil has the three parts. Okay, each pistil has the three parts: the stigma, the style, the ovary. Okay, I have already seen. Okay, the stigma, style, and ovary, three parts of pistil. This is called as pistil. Now you can see here this picture is about ovary. Here stigma, style, and this is the ovary. So in the ovary contains the ovule. ओव्यूल इन फ्यूचर विल मेक द सीड. ओके, आपने सीड के बारे में सुना होगा, बीज हम जो बोलते हैं. सो व्हाट इज बीज?
वो फ्यूचर में पास्ट में वो ओव्यूल होता है, एंड ओव्यूल फ्यूचर में क्या बनता है, सीड बनता है। ओके, एंड दिस इज द ओवरी। ओके, ओवरी आगे जाके क्या बनेगी, फ्रूट बनेगी। जब रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा तब ओवरी क्या होगी, फ्रूट बन जाएगी। जैसे हम फ्रूट खाते हैं, फ्रूट के अंदर बीज होते हैं। ओके, सो ओवरी एंड ओवरी कंटेन्स द ओव्यूल्स। हियर यू कैन सी द डायग्राम। नाउ द स्टिग्मा serve as a landing platform for the pollen grains. Okay, as I said earlier, pollen grain को यहाँ पर आना जरूरी है because pollen grains are male. Okay, so male and female combination is necessary. So the stigma of female is serve as a landing platform. वहाँ पर लैंड होना है pollen grains को, वहाँ पर लैंड नहीं होगी तो आगे कैसे जा पाएगी और फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। ओके, सो द स्टाइल इज द इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। ओके, स्टाइल क्या है, इलोंगेटेड पार्ट है, स्लेंडर पार्ट है, एंड बीनीथ द स्टिग्मा जो उसको सपोर्ट देगा। द बेजल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड एज ओवरी। ओके, मैंने ओवरी आपको दिखाया। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी कॉल्ड एज लॉक्यूल। ओके, सो लॉक्यूल मीनिंग हियर you can see this is ovary, this is ovule, but the empty space between the two ovules is called as ocule. Okay, empty space, so ocule. So here you can see the inside the ovary is a ovarian cavity called as locule. Cavity meaning free space. Now the placenta is located inside the ovarian cavity. This is important. Placenta. Okay, what is placenta? Recall the definition and types of placentation that you studied in our class 11th. Class 11th बायोलॉजी में हमने पढ़ा था प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा मीनिंग, प्लेसेंटा क्या होता है सबसे पहले। सो प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो जब वेन एवर द न्यू ऑर्गेनिज्म विल डेवलपिंग, देन प्लेसेंटा विल गिव द न्यूट्रिशन टू दैट फीटस इन एनिमल्स एंड ह्यूमन्स ऑल्सो। ह्यूमन्स के अंदर एक प्लेसेंटा, फॉर एग्जांपल जब बेबी बोर्न होता है तब वो कट करते हैं प्लेसेंटा की ट्यूब। ओके, सो प्लेसेंटा क्या करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है थ्रू द मदर। जब मदर के अंदर होता है तब उसको फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सो द प्लेसेंटा इज द पाइपलाइन। सो हियर द प्लेसेंटा ऑफ सीड ऑफ हियर दिस इन दिस केस प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, दिस कैविटी। ओके, ocule. So arising from the placenta are the megasporangia commonly called as ovules. So the placenta arising from the placenta there are sporangia, and megasporangia meaning female, that's why mega here word. So megasporangia and commonly called as ovules. Here keep in mind the difference between microsporangia and megasporangia. So in microsporangia are male and megasporangia are female. So don't confuse with these two words. The number of ovules in an ovary may be one, for example wheat, paddy, mango, or more than one, papaya, watermelon, or cheats. Okay, so this is the depend on different species number of ovules. For example अगर हम watermelon की बात करें तो watermelon जब complete mature हो जाता है तब उसमें काफ़ी सारे seeds पाए जाते हैं। There are lots of seed. सो मोर देन वन हुए, सो डेट्स वाई द नंबर ऑफ ओव्यूल आर मैनी। एंड जैसे कि वीट के प्लांट में क्या होगा, ओनली वन सीड इज देयर। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ द प्रोसेस द मेगास्पोरेंजियम वी कैन से ओव्यूल, द स्ट्रक्चर वी विल सी। लेट अस फेमिलियराइज ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule. Here angiosperm, okay, angiosperm meaning flowering plants, only flower has this टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, सो टिपिकल एंजियोस्पर्म का ओव्यूल कैसा होगा वो हम देखेंगे। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड एज फ्यूनिकल। ओके, ओव्यूल क्या है, स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा, एज यू नो व्हाट इज प्लेसेंटा। ओके, नाउ बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड एज फ्यूनिकल। हियर स्टॉक इज द सपोर्टिव स्ट्रक्चर। आई विल शो यू हियर। ओके, सो दिस इज फ्यूनिकल, हियर यू कैन से। Okay, let me show the pictures. Okay, this is, so guys, this is our ovule. Okay, and this is our placenta. Okay, so this is the funicle. Now what is funicle? Here you can see
Funicle is a supportive structure, okay, attached with the placenta here. Okay, now this is picture is from our textbook, our NCERT. So this is inverted. Keep in mind guys, this is the inverted picture. This is the inverted picture of ovule in our NCERT, but in actual you can identify easily. Okay, this is our now here. Okay, this picture is from our NCERT, but this is inverted. अगर मैं इसको अभी सीधा करूँगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. दिस इज़ द करेक्ट. देखो आप, ये फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर के अंदर ये स्ट्रक्चर ऐसा है, यू कैन सी हियर, एंड दिस इज ओके. सो दिस इज फ्रॉम NCERT and this is the true image. I have inverted here. Okay, so you can see the difference between two diagrams. Okay, so this is the inverted one. Now in this is funicle. Okay, this is funicle here, you can see here. So please keep in mind both the pictures, so you will not get confused. Now the body of the ovule fuses with the funicle in the region called as hilum. Now what is hilum? Keep in mind, this is another important term, hilum. Okay, one is funicle, and this funicle is attached to the ovule. Okay, attached with the ovule, and that region is called as hilum. I will show you what is hilum. Okay, guys, see here. Now this picture, this is called as hilum. Okay, here you can see, ये क्या है? हाइलम है. हाइलम किसको बोलते हैं? फ्यूनिकल जहाँ पे ओव्यूल को टच करेगा, जहाँ पर अटैच होगा. सो दिस इज आवर ओव्यूल and this is our funicle, and attached here is the point of called as hilum. Okay, so please guys don't get confused between hilum, funicle and all these terms. So hilum, we can say this all area is hilum. Okay, this all area is called as hilum because this all area of is of ovule, and this is the funicle. So funicle attach all this region. Okay, so that's why called as hilum. This is the hilum region. Okay, now here okay, the body of ovule fuse with the funicle in the region called as hilum. Now okay, thus the hilum represents the junction between ovule and funicle. Okay, junction meaning दो जगह को जो जोड़ता हो उसको हम जंक्शन बोलते हैं. Okay, so junction is between the ovule and funicle. Now each ovule has one or two protective envelopes called as integument. Here is another important, guys, this whole topic is very important, so please be concentrated here. Now each ovule has one or two protective envelope. Protective meaning outer layers each ovule has. Okay, and called as integuments. I will show you here. Okay, here this is ovule, and two protective layers are, this is inner integument, this is outer integument. 1 and 2 integument layers, they are protective, they are supportive in nature. Now okay, here integuments encircle the nucleus, nucellus. Here is the nucellus, except at the tip where a small opening called as micropyle. Okay, now small opening is called as micropyle. Here in this picture, this is micropyle. Okay, this is the small opening, okay, of the ovule, and this is the micropyle. Okay, so what is mean by this integument? So integument covers whole the ovule, but except this layer, except this region of micropyle. Micropyle के अलावा जो इंटेग्यूमेंट है वो पूरे ओव्यूल को कवर करेगा, सिर्फ इतने हिस्से में ही नहीं है. आप लोग देख सकते हो, यू कैन सी इजीली हियर, नॉट इंटेग्यूमेंट इज हियर. ओके, नाउ ऑपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चेलेजा, नॉट चलाजा. चलाजा नहीं है, चेलेजा. सो ऑपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड पे चेलेजा होगा, एंड दैट रिप्रेजेंटिंग द बेजल पार्ट ऑफ द ओव्यूल. बेजल, here you can see chalazal pole. This is the chalazal pole, supportive pole. Okay, basal, basic. Okay, basal part. So opposite the micropylar because
here micropyle and here chalaza. So micropyle and chalaza are both two opposite. Keep in mind this difference, here micropyle and this is chalaza, and this picture is inverted. Okay, not true. I have already seen show you the true picture. Now enclosed within the integuments is a mass of cells called as nucellus. Okay, enclosed within the integuments के अंदर एक mass होगा cells का, that is called as nucellus. Cells of the nucellus have abundant reserve food materials. Okay, so what is the function of nucellus, cells of nucellus? So they will provide the nutrients because they reserve food materials. वो क्या है, वो food का storage form है, that's why they provide the material, food material. And located in the nucleus, nucellus is the embryo sac. Embryo sac, sac meaning bag like structure, or female gametophyte. Here this is the true female gametophyte is inside the nucellus. Okay, is the embryo sac. Now an ovule generally has a single embryo sac formed from the megaspore. Okay, an ovule generally has a single, only one embryo sac, and which is formed from the megaspore. Megaspore meaning the female gametophyte. Now we will see the process. Process meaning the process of megasporogenesis. Okay, so in megasporogenesis we will see the process of forming the megaspores. The process of formation of megaspores from the megaspore mother cell. This is important term here, MMC, megaspore mother cell, called as megasporogenesis. Guys, one similar word we have already seen, the PMC, pollen mother cell. But pollen mother cell is a female part, but here this is strongly a female. Okay, megaspore mother cell. Now this is differentiate between pollen mother cell. Pollen is a male part. Okay, that's why. So please don't get confused. I am repeating. Why I am repeating? Because you will not get confused. That's why. So ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region of the nucellus. कहाँ पर differentiate होंगे? So MMC in the micropylar region. Okay, micropylar region मैंने बताया of the nucellus. It is the large cell containing the dense cytoplasm. Large cell होगा and containing the dense cytoplasm, meaning the cytoplasm nature. Okay, nature is very dense. Now and this is a prominent nucleus. This have prominent nucleus also. Okay, so dense cytoplasm plus a nucleus. Nucleus is a center of cell. Now the MMC undergoes the meiotic division. Here this is also important, meiotic division. Meiotic meaning the half number of chromosomes. So this is a type of cell division. I always say, what is the importance of the MMC undergoing meiosis? Meiosis results in the production of 4 megaspores. Okay, as we know, what is the role of meiosis? Meiosis will in the final product they produce 4 cells. Okay, in the meiosis the final product is 4 cells from the one cell. So this is meiosis, but the chromosomes numbers आधे हो जाएंगे finally. Okay, now what is the importance of MMC undergoing meiosis? Because of this 4 megaspores. 4 megaspores उसको generate करने हैं, that's why उसको meiosis करना पड़ेगा. Figure 2.8a. So this is our figure 2.8a. This is, you can say, micropylar end. This is okay. This is now true structure, micropylar end here. Okay, and here you can see the megaspore mother cell, big. This is big cell. You can see here. This is nucleus. This is dense cytoplasm. Okay, and this is surrounding cells. Okay, nucellus. You can see here. This is the nucellus layer. Now you can see here megaspore dead, meaning यहाँ पर डिवीज़न हो रहा है. एंड फाइनली जब मियोसिस हो जाएगा तो फाइनल में हमको 4 सेल मिलेंगे. हियर इज द ओनली वन, एंड हियर फाइनली megaspore tetrad meaning 4 number of cells are here. So this is micropylar and this is 1 2 3 4 cells are generated after the meiosis completed. Okay, here. So now our next topic is female gametophyte. Now in a majority of flowering plants, one of the megaspore is functional
while the other 3 are degenerate. Okay, why? ओके गाइस, देखो यहाँ पर ये 4 मेगास्पोर जनरेट हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, लेकिन इनमें से 3 तो कुछ काम के नहीं है, निकम्मे हैं. ओनली 1 विल बी सर्वाइव. सो इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 1 ऑफ द मेगास्पोर इज द फंक्शनल. ओनली 1 ही फंक्शन करेगा एंड अदर 3 आर डिजनरेट, मतलब वो कुछ काम के नहीं हैं. Only the functional megaspore develop into the female gametophyte. Now this is the true gametophyte is one particular one megaspore and make the embryo sac. This method of embryo sac formation from the single megaspore is called as monosporic development. So question can be asked, what is the monosporic development? Mono meaning one, mono meaning one, mono meaning single. So here only single cell is survival. That's why the method of embryo sac formation from the single megaspore is called as monosporic development. What will be the ploidy of the cells of the nucellus, MMC, the functional megaspore and the female gametophyte? You have to answer these questions. Okay, what will be the ploidy? Okay, मैं आपको हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए. प्लोइडी का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स. ओके, एज वी नो गैमेट्स में कौन से कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, स्पोर्स में कितने होते हैं. सो यू हैव टू नो एंड यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड you can easily will answer this question. Now let us study the formation of embryo sac in a little more detail. Okay, we are going to study this formation in detail. Now the nucleus of the functional megaspore divides mitotically. Here this is another important word, mitosis. Okay, now this nucleus of functional okay, यहाँ पर only एक ही सेल हमको मिला है जो फंक्शनल है. ओके, 3 तो डिजनरेट हो गए. सो नाउ दिस वन फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू द फॉर्म 2 न्यूक्लियाई. ओके, अभी माइटोसिस होगा क्योंकि मियोसिस तो ऑलरेडी हो चुका है, अभी आगे थोड़ी ना मियोसिस होगा, ऑलरेडी वो आधा हो चुका है क्रोमोजोम्स. सो अभी माइटोसिस होगा. माइटोसिस मीनिंग द इक्वल डिवीजन ऑफ सेल्स. सो एक सेल्स में से 2 सेल्स कंप्लीट बनेंगे एंड क्रोमोजोम नंबर ऑल्सो विल बी इक्वल. सो माइटोटिकली डिवाइड to form the 2 nuclei. Nuclei are the plural form of nucleus which move to the opposite poles forming the 2 nucleate embryo sac. दोनों न्यूक्लियस जो होंगे वो अलग अलग पोल में चले जाएंगे, डिफरेंट पोल, एंड फॉर्मिंग द 2 nucleate embryo sac. ओके, 2 न्यूक्लियस यहाँ पर बन रहे हैं. 2 more sequential mitotic nuclear divisions result in the formation of 4 nucleate and later the 8 nucleate stages of the embryo sac. यहाँ पर जो एम्ब्रियो सेक अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, पहले तो हमको यहाँ 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक मिला. नाउ फिर क्या होगा, 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोसिस होगा और 2 माइटोसिस होंगे, मतलब 2 का माइटोसिस होगा तो 4 बनेंगे एंड 4 का फर्दर माइटोसिस होगा तो 4 में से 8 बनेंगे. ओके, सो फाइनली वी विल गेट द 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो सेक. हियर यू कैन सी द पिक्चर फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. दिस इज 2 न्यूक्लियस. ओके, 1 2 दोनों के पोल यहाँ अलग अलग हैं. सो एक बार माइटोसिस होगा तो एक में से 2 बने, इधर भी एक में से 2 बने, तो फाइनली 2 में से 4 बने एंड हियर 4 में से 8 बने, 2 के 2 यहाँ बने, 2 के 2 यहाँ बने. ओके, सो दिस इज द फाइनल स्टेज, 8 न्यूक्लिएटेड हियर. नाउ दिस इज सम डिटेल. सो दिस इज आवर माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस इज आवर चेलेजल एंड. नाउ हियर यू कैन सी this nucleus is nuclei, sorry. So this is egg. You can see these all terms will be discussed. 2 polar nuclei are in the center, antipodals. I will show you. Now it is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear, that is nuclear division are not followed immediately by the cell wall formation. Okay, here what is the meaning by this line? ओके, सो सेल वॉल यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होगा, इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा. न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो जाएगा बट सेल वॉल यहाँ पर फॉर्म नहीं होगी. आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक. सो यहाँ पर जैसे न्यूक्लियस बनेगा वैसे सेल वॉल नहीं बनेगी, लेकिन आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन
leading to the organization of typical female gametophyte or embryo set. So our final product is, our goal is female gametophytes. So observe the distribution of cells inside the embryo sac, figure 2.8 B and C. So here figure B and C. So this is now ये अभी देखो ये इन्वर्टेड था, ओके जैसा हमारी NCERT बुक में है, सो ये ऐसा फॉर्म है, लेकिन रियल में कैसा होता है, फ्लावर के अंदर ऐसा होता है हियर. सो दिस इज़ द एक्चुअल फिगर. चेलेजल एंड जो है वो ऊपर की तरफ आएगा. ओके सो हियर दिस इज़ द चेलेजल एंड. नाउ टू पोलर न्यूक्लियाइज यू कैन सी, एंड दिस इज़ द सेंट्रल सेल. दिस इज़ द सेंट्रल सेल. दिस इज़ एक, देखो 3 न्यूक्लियस यहाँ पर आ गए, 3 न्यूक्लियस यहाँ पर आ गए, यू कैन सी हियर. सो 3 3 6 एंड 2 इधर, सो 8 न्यूक्लियस हो गए. एंड हियर द filiforms apparatus, I will show you the functions. Okay, so this is the final product of this process. Now it is of the interest to note that this mitotic division are strictly free nuclear, that is nuclear division are not followed immediately by cell wall formation. ये हमने देख लिया. Okay, now this slide is copied. Okay, हाँ, yes, there is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac. यहाँ पर complete distribution होगा cells का. 3 cells are the group together at the micropylar end. मैंने जैसे अभी आपको दिखाया. Okay, wait, I will show you. So here, okay, here you can see the structures of distribution of cells, nucleuses. Okay, now 3 cells are grouped together, the micropylar end, the constitute the egg apparatus. Now the egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell. Okay, यहाँ पर देखते हैं 2 synergids. Okay, these 2 are synergids and this is 1 the egg cell. So 3 cells हो गए यहाँ पर. Okay, like that. Now the synergids have the special cellular thickenings at the micropylar tip called as filiform. मैंने पहले ही बोला था, as I said earlier, filiform apparatus. So what is the role? So which play an important role in the guiding the pollen tubes into the synergid. Okay, जब okay पिक्चर से ही बताता हूँ आपको यहाँ पर. Okay, this is the you can say here micropylar end. Okay, यहाँ पर micropylar end है. So फ्लावर के अंदर ये जो होगा, okay, the structure. So this is the central cell. Okay, this is the central cell. नाउ फिलीफॉर्म एपरेटस जो है यहाँ पर, उसका काम क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. एंड व्हाट इज द फंक्शन? सो दे विल गाइड द पोलन सेल. नाउ पोलन सेल कहाँ से आएगा? पोलन सेल आएगा कहाँ से? बिकॉज फर्टिलाइजेशन होना है, तभी पोलन सेल को यहाँ पर आना पड़ेगा मदर सेल के पास. ओके, सो फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पर. नाउ this will filiform apparatus guide the pollen cell to come here. Okay, यहाँ पर आने के लिए उसको गाइड करेगा, पोलन सेल को कहेगा ये filiform apparatus कि आपको यहाँ पर जाना है, भाई साहब आइए यहाँ पर. So like that. So this is the role of filiform apparatus. Now 3 cells are at the chelazal end and are called as antipodals. Okay, 3 cells are at the chelazal end and are called as antipodals. Here antipodals, please don't get confused. The large central cell, as mentioned earlier, has the 2 polar nuclei. Now thus a typical angiosperm embryo sac at the maturity, though 8 nucleate, is the 7 celled. I will show you how. Now here, okay, so this is the mature cell. Now this is chelazal end and 3 antipodal cells. Here 3 antipodal cells. So 3 here nucleus, 3 here nucleus, 3 plus 3 6, and here this polar nuclei will combine and make the only 1 nucleus. So there are 7 cells. Okay, this is the one big cell, 1 cell, 3 cells here, 1 plus 3 4, and 3 cells here, 4 plus 3 7. So this is the 7 cell structure, but nuclei are the 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. So 7 cell and 8 nuclei. जनरली क्या होता है, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है,
बट यहाँ पर क्या होगा, जब मैच्योर होगा एम्ब्रियो सेक तो वहाँ पर 8 न्यूक्लिएट का स्ट्रक्चर होगा एंड 7 सेल आर देयर। ओके गाइस, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट पोलिनेशन। ओके, आज हमने इम्पॉर्टेंट पार्ट देख लिया है हमारा, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, उसके पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा। अब हम देखेंगे पोलिनेशन, हाउ द पोलिनेशन अकर्स इन फ्लावर्स। ओके, पोलिनेशन इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट फंडा। ओके गाइस, so guys, thank you for attending this lecture. Okay, so now see you soon in the next lecture. Jai Swaminarayan.